स्टार्टिंग से करना है. Hello everyone in the Ansarkari, and we are seeing the comprehensions of paper 2023. So the first question today: in India, the segregation of municipal waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector. More than three-fourths of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for the processing, resource recovery, and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation between the wet waste and the rest. Collection, recycling, and before getting to the landfill. With which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste, that is biodegradable versus non-biodegradable component and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. तो पैसेज पढ़कर हमें ये समझ आया है कि एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है, वेस्ट टू एनर्जी की बात की जा रही है, रिसाइकलिंग की बात की जा रही है, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड इज द म्युनिसिपैलिटी रोल एंड सेकंड इज द फोकस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, सेग्रीगेशन एंड सो ऑन. तो क्वेश्चन में पूछा है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made, यानी क्या सोच करके इस पैसेज को लिखा गया. पहला, collection, processing and segregation of municipal waste should be with the government agency, and resource recovery, recycling required technological input that can be best handled by private sector enterprises. So which assumptions according to you are correct? Karuna, what's your view? Karuna? Okay, so might she is not available. Prerna, आपका क्या आंसर है? According to me, it should be D. Okay, justify it. The same thing, because यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट की इतनी बात नहीं हो रही, तो अज्यूम नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू मी, आप बता दो. Okay, so your answer is according to me correct, because I will also have the D option. The reason because it is in the first option mentioned that it should be uh, the responsibility with the government agencies, but in the passage also it has been talked that some of the things are in the private hands. Second, recovery resource recycling requires techno input that can be best handled by the private sector enterprises. So this becomes wrong because of two assumptions of mine. First, we are giving the administrative paper, and this statement neglects the administration, that they do not have efficiency to deliver this thing. Number one. And second thing, uh, best handled by the private sector. So it is very extreme in its approach. So because of which I will go for D. So Oshik and Mansi, if you want to have another justification, so you can read that. No problem. Okay, thanks so much. So now we are coming on the second question. Which of the following statements best reflects the crux of the passage? So generation of energy from municipal solid waste is inexpensive. Biomethanation is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants. The biodegradable component of India's municipal solid waste is not adequate to provide energy from waste efficiently and effectively. Reena? According to me, answer C should be correct, the option number C, because बाकी सब में passage is not talking about it in detail. मतलब मेन वो यही segregation के ऊपर ही focus कराता है, and ये terms mentioned है, segregation and waste to energy plants. So according to me, C is the right answer. Okay. So according to me, I'm reiterating the Prerna's option, that is C. Not because of the justification which she gave, but I have justification that in the passage, everything is being talked, but that is presented incorrect in the incorrect form in the option. और प्रवेश एक और भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव. तो अगर इस तरफ से भी अगर जाएंगे ना, तो एक तो पहली बात दो तरीका होता है, या तो आप मोस्ट प्रोबेबल स्टेटमेंट को चूज करिए, उसके बाद आप जाके पैसेज जा करके आप डिराइव करिए. दोनों का अगर सेम आंसर रहा है तो सही है फिर, है ना.
लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो स्टेटमेंट है वो भी एक तरह से सी है और वो भी सी, तो इसलिए आ रहा है आंसर इसमें, क्योंकि ए और बी देखोगे तो आइडियल वेस्ट, बायोमेथिनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये भी गलत है प्रवेश। Yes, हाँ, okay. हम्म, तो इसलिए Okay. Okay, so here the passage is speaking that there's a claim that organic farming is inherently safer and healthier. The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as the Datura flower, which is uh, very common, and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched or regulated. So, Prerna, where is the question? Okay. Based on the above passage, the following assumptions. Again, I'm reiterating the thing. क्या सोचकर passage लिखा गया है? So, organic farming is inherently unsafe for both farmers and consumers, and farmers and consumers need to be educated about eco-friendly food. So, Prerna, now tell me which statement is correct and which one is you are justifying. फर्स्ट तो डेफिनेटली रॉन्ग है, जो बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। सेकंड वाले में एजुकेशन अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, एक तो इसमें कंज्यूमर की भी बात हो रही है कि कंज्यूमर को भी करना, शायद से दोनों रॉन्ग है, बट मे बी सेकंड वाला ठीक हो सकता है। लाइक किस प्रपोर्शन में क्या मैन्योर वगैरह फर्टिलाइजर डालनी है, ये वाली चीज इको फ्रेंडली फूड से मुझे आपका समझ क्या में कहना है? क्या चीज। मैं ओशिक से पूछ रहा हूँ उनका क्या कहना है? आई थिंक द ऑप्शन वुड बी बी इसमें। बी तो या डी? बी। डी फॉर बैट। मेरे को डी है। हो सके अजम्पशन पूछा ना, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा मतलब एक नहीं, बार। मेरे हिसाब से According to me also, आंसर it इज should be डी। fourth option. डी है फोर्थ ना? होना हाँ चाहिए, हाँ क्योंकि ठीक 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 है। फार्मर्स की तो बात की गई है, हम्म, कंज्यूमर्स की बात नहीं की गई है, एंड सेकंड में भी इको फ्रेंडली फूड की बात की गई है। इको फ्रेंडली कल्टीवेशन प्रैक्टिस की बात की जाती तो दैट वुड हैव बीन करेक्ट। ठीक है, डी होगा I'll इसका go आंसर। for B. B for bat. The reason being, it is mentioned क्या सोच करके लिखा गया है। तो फार्मर्स की टेक्नोलॉजी एक इशू है और जो इनपुट यूज करते हैं वो एक इशू है, और एट द एंड ऑफ द डे ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो कंज्यूमर्स को हर्ट करता है। तो फार्मर्स इनपुट की नॉलेज हो और कंज्यूमर्स को चूज करने की नॉलेज हो, तो यही सोचकर ये पैसेज मेरे हिसाब से लिखा गया है। तो आई विल गो फॉर बी फॉर बैट। Okay, which one of the following statements best reflects the most logical, rational, and practical message conveyed by the author? So, in India, the organic farming should not be promoted as a substitute for the conventional farming. There are no safe organic alternatives to chemical fertilizers. In India, the farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. And D, the aim of organic farming should not be to generate quick profits, as there is no still global market for its products. So, Prerna, अकॉर्डिंग टू मी दी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बिकॉज ए और बी तो गलत ही लग रहा है। क्यों लग should रहे हैं not be गलत आपको? promoted। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी प्रमोटेड, मतलब कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट तो हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते, बट थोड़ा ऑल्टरनेटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी ज्यादा कन्वेंशनल फार्मिंग का। फिर अगर हम बी की बात करते हैं तो देर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल, तो है ऑल्टरनेटिव्स हैं, मे बी उनका कॉम्पोजिशन और जो जिस मात्रा में वो फर्टिलाइजर्स की जैसे होता है नाइट्रोजन वगैरह वो उतनी ना हो, बट ऑल्टरनेटिव्स तो होंगे। फिर डी की हम बात करते हैं, द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट, तो ये ह्यूज प्रॉफिट, ये वाली तो कुछ बात नहीं हो रही, और वैसे भी इतना नहीं है इसका Okay, ऑर्गेनिक so फार्मिंग। I also go with the Prerna's option, then that is C. So,
आई थिंक Oshik, ठीक है, आप नहीं ठीक है सर, ठीक। इसमें हाँ ठीक है, सी So okay, thank you so much and keep watching Ansarkari and stay tuned. Thank you.